Hey everyone, my name is Parul and welcome to this exciting series of core components in React Native for beginners. In this introductory video, we will learn the basics of React Native components, and we will also dive into the components that are available in React Native. ये सब components prerequisites हैं to learn the development in React Native. Without learning or without knowing about these core components, it is difficult to learn React Native. I want to make this channel a one-stop shop for everything related to React Native. अभी के लिए we have these topics available. React hooks जिसके लिए U-state hook is available, and then React Native core components का एक पूरा series है which I am going to um, uh, make right now, which I'm planning to make right now, and then we will add more topic here in this section where I have written continued. देन एक बार एक बेसिक डिफरेंस देख लेते हैं कौन कौन से टाइप के कंपोनेंट्स कोर कंपोनेंट्स या फंडामेंटल कंपोनेंट्स अवेलेबल हैं रिएक्ट नेटिव में. पहले देर इज़ बेसिक कंपोनेंट, देन देर इज़ यूज़र इंटरफेस, देन देर आर some components in list views, and then there is others. So basic component में we have view, text input, image, scroll view, safe area view. This is only for iOS and not for Android. Touchable opacity, touchable highlight. We have other things in touchables, जैसे कि touchable without feedback is also one of the component. इसके बाद है यूज़र इंटरफेस. तो यूज़र इंटरफेस में देर इज़ बटन एंड स्विच, and then in list view we have flat list and section list, and in others there is activity indicator, alert, modal, image background and pressable. So ये सारे topics जो हैं ये सब basic core components हैं. इसके अलावा वी विल ऑल्सो बी कवरिंग फ्यू अदर थिंग्स जिसको मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं किया है. फॉर एग्जांपल वी विल बी डूइंग स्टाइलिंग, वी विल बी लर्निंग अबाउट फ्लेक्स के अंदर बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं. फ्लेक्स डायरेक्शन, इसके अलावा फ्लेक्स रैप एंड ये सब बहुत सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं. इसके अलावा हम लोग नेविगेशन करने वाले हैं इसके अंदर. नेविगेशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रिएक्ट नेटिव. इसके अलावा हम लोग यहाँ पे कस्टम कंपोनेंट्स भी करने वाले हैं इस सीरीज़ में. सो आई वुड से कि ये एक पूरा बिगनर सीरीज़ है, and after you learn this series you'll be able to create a basic UIs and a basic navigation, and you can also work with props. So in this series you will learn all these things, and I would say let's stay connected, and let's dive into the next video, which is going to cover the first core component, that is text.